Sir, what will be the class today? It is on lean startup and minimum viable product. Just wait for 2 minutes more. Okay, sir. Okay, sir. We will start this session. Sir, can we start? Hardik, sir. Um, just a second. I'm just connecting with my some Bluetooth thing. So just give me a minute. Okay, sir. Okay, I think, can you hear me? Abhinandan sir? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Shall we start, sir? Yes, sir. I'll just share my screen and Okay. my PPT, and then we'll begin the session. Okay, sir. Let us start with the introduction, sir. Yes, definitely. Good evening, all the participants. Okay, so Good good evening, evening, sir. everyone. Good evening, sir. Okay. On behalf of Good evening, Thank you sir. very much for the opportunity, Abhinandan sir, and Yes. to the college and all the faculty members, those who are present here, and to all the students. Today we are here on the very special topic about the lean startup. Okay, and when we're talking about lean startup and minimum viable products, before going to on that particular topic, let me introduce myself. I am Dr. Hardik Brahmbhatt, faculty for finance and economics at Narayana Business School, Ahmedabad, and I've been working since total 9 to 10 years of experience. I have. I'm working with government of Gujarat. I'm working with Gujarat Economic Association, working with different projects of government of India in which I incorporate my ideas and views. I have generally specialization over the finance startups and different kinds of what we can say investments and budgetary matters. So, in as far as all that particular scenarios are concerned, I think startup is also one of the very important things. As we can see, since 2009, 2008, there is a different wave we can say which is going on in the market, which is of about startups into the normal corporate world also. The corporates and the companies have started taking seriously what exactly the startups are. Okay, so before moving ahead, I'll just share the screen, share you the presentation so that things will be easier.
I think everybody can see the screen. So is the screen visible? Yes, sir, it is visible. Okay. So now we are moving ahead with the lean startup and minimum viable product. But before that, if we can have an interaction about, because see, when we are talking about lean startup, or when we are talking about the different also about the product thing also, we have something to come up, or the thing which comes to our mind, that is a startup. So can anybody help me out with what exactly the startup means, or why the word startup and why not anything else? Anybody who can just tell what exactly the startup? Anybody, any students? आप में से कोई अगर बताना चाहे startup क्या होता है? Okay, I think no worries. Now, when we see, when generally we discuss about a startup, or when we hear the word exactly about the startup, okay, many things comes into the mind, or from the picture also something comes into the mind that, yeah, we have one great idea. Let's make our idea the huge idea. Let's make our own company. Let's be the director. Let's make a huge company. नहीं, ये सब दिमाग में नहीं आता है. Originally when we talk about startup, हमारे दिमाग में क्या आता है? We will buy a new car. एक अच्छा सा मर्सिडीज खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, रोज ऑफिस जाएंगे, लोगों से काम करवाएंगे, and that's it. But when we talk about startup, startup is much more important thing. Or if we understand the exactly what exactly the startup means, so there are many aspects. It is not only the idea which is there, and there are many things like you have to think about the prospects which are there. You have to analyze the thing. You have to make the research. You have to think about the competition. You have to think about the money. You have to talk about the different currencies. You have to discuss about the trade. You have to discuss about the export. You need to understand the market. You need to understand your particular marketing strategies to enter into the particular market segment, and many other things when we say a word startup. Now, startup generally we all know that when you have a particular idea, when you're working into it, and then your idea becomes bigger. Okay, it means एक idea आया, कहीं से पैसे लो, कहीं से पैसा लेके अपने आइडिया को और बड़ा बनाओ, और बड़ा बनने के बाद एक कंपनी बनाओ, and then float into the market, and your idea or your startup will grow into the market. Okay, but it is not initially people used to understand this as a startup. But in 2009, and after that in the book also in year 2011, Eric Rice has made one particular very good terminology which he came up with, which is known as lean startup. Now, what exactly is the lean startup? Let's coming to the exact point of lean startup. Okay, now lean startup generally works on the three basic principles. That is about the build, measure, and learn. Okay. Now, generally, we are saying, "Arey, yaar, it is nothing new about it." We all knew about this thing. Okay. When you have an idea, you need to build it. When you build it, you have to code it. Then you measure it. Then there is a data. Then you learn about the new thing. There is nothing new about that particular scenario. But I would like to thank Abhinandan sir and also the team who is working on this particular scenario to think also about the great topic and the mixture of the two, that is about lean startup and exactly association of the minimum viable product. Okay, so generally what happens is, okay, when you are talking about build, measure, and learn, first thing that comes is about the building the minimum viable version of the product. It is not only about building of the whole model or building of the whole prototype. Okay. Uh, if you might have seen, many people work upon a one particular model and they spend around 10 years, 12 years, 15 years in just building the particular model. And after building that particular model, they put up that model for the validation. Okay. And when they keep it for the validation, when they keep it for the testing one, then generally they come to know that whether people are accepting it or not. Okay.
So when people are accepting or not, it's already too late for you because you have already built it. Okay. So if I tell about the this thing also, see, entrepreneurs are everywhere, right? Or when we say generally about the startup thing or a lean startup also, we find that entrepreneurs are everywhere. When you have an idea and when you want to generate something out of it to the open market, that is about exactly the thing. So entrepreneurs are everywhere. You will get the ideas also. Okay, if you cannot find ideas, जरा वो चाय की टपरी पे खड़े हो जाओ, you will definitely get lot and lot of ideas everywhere. Okay. Uh, Anybody from finance background? Anybody who is interested in finance from yours? Anybody? Okay. So generally, if anybody is into investments and finance, and वो लोग को भी पता होगा कि when you just go to a चाय का टपरी and वहाँ पे डिस्कशन होता है, अरे यार go for Reliance Industries खरीद लो, टाटा मोटर्स खरीदो, अरे LIC का IPO लगाया क्या? What would be the future scenario? How that will work in the future? And n number of discussions are going on for that particular financial aspect of चाय का टपरी. When you go with the idea, just चाय की टपरी पे खड़े रहो and किसी से भी randomly discuss करो, यार I have this idea. Okay. कम से कम 50-50 probability is there that 50% will appreciate your idea and 50% will discard your idea. Okay. So what happens is on that basis you cannot validate because this is just only about the basic thing. This is only about the standard thing, which is known as this is your entrepreneur mindset. You want to deal with that thing, and so you are saying this. Okay. So we are not talking about the entrepreneur assumptions. We are not going with the certain kind of a what we can say the kalpanic kahanis. Okay, we are working for the validation. That has to be the database. That has to be validated by the learning, validated by the data, validated by the proper measurements. Okay. Now another thing that comes like we have entrepreneurship. It needs a proper management. It needs a validation of the learning. It also needs the innovation accounting. Okay, now this is a new terminology again for the startups because you might have learned about accounting, but what about innovation accounting? Okay, so for successful creating any sustainable business or entrepreneurship, one have to be capable of monitoring the process objectively, setting up the milestones, prioritizing the work, and making the right decision based on what the data shows is appropriate. Okay, that is about innovation accounting. Then generally comes this three particular major key principles, which is build, measure, and learn. That is the build, measure, and learn also loop and enables the validated learning through the famous, generally it is very famous as MVP, that is minimum viable product, on which the experiments are generally conducted, or we can say the loop work, or we can say the trial has been done on that particular, and that is considered as the key principle of the lean startup. Okay. Now, if we just break down these three particular scenarios, so that comes to the another aspect, like customers test the product. Okay, and the entrepreneurs measures that particular data. Okay, so you have to make one particular normal version, or you can say just एक चलता हुआ एक version create कर लो product का, market में वो product को डाल दो, कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, कस्टमर उसका डेटा देंगे, कस्टमर वो प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, दे विल गिव यू द कोड. वो जो डेटा आएगा, वो जो उसका कोडिंग आपका जो होगा, उसको आपको एक मेजरमेंट के साथ डील करना होगा. ओके, एंड आपको वो सारे मेजरमेंट्स के साथ डील करके देन यू विल बी हैविंग द फाइनल डेटा. जो डेटा को आपको लर्न करना है इन एंड लर्न इन द सेंस यू हैव टू think about all the insights which you have thought about. You have to report back to with the entrepreneur mindset कि भाई आपका objective क्या है, and on the basis of the customer needs, अब अगर आपको objective है, if your objective is about profit, so on the basis of that data, then you will be deciding that whether this startup or this idea has to be upgraded or it has to be scrapped. Okay, so this is again the whole cycle which goes on and on and on. अगर लर्न भी कर लिया कि यार इसको थोड़ा अपग्रेड करने का जरूरत है, so after the upgradation also, the idea of upgradation also means you have to build another thing and then you have to float to the market. Okay, next is this one particular great thing that we have seen in the first point, that is building the minimum viable version of the product.
which is the minimum viable product. That is the MVP. Okay. Now, if you look at this particular diagram, I think which is on the screen, so शायद ऐसा कुछ लगे, this seems like to be the hierarchy. Okay. What is MVP? If you have a great idea, build your product, उसके result को measure करो, उसको validate करो, उसको improve करो. That's it. Okay. And with that particular lean startup structure, when you're incorporating with minimum viable product, it means it has to be a functional, it has to be reliable, it has to be usable, it has to be of the great design. When all the particular things get together, then you have your final product ready into the market. With this minimum viable product, let me tell you that there was one product of Tata which is already into the market, and as you all know that Tata never fails or Tata never disappoints us as far as few products are concerned. But Tata recently have came up with the product that is about what we can say directly eatable product. Okay, means you have to just randomly cook it into the oven for 2 minutes, or you have to just warm it up with the hot water or lukewarm water, and your food is ready. So into the ready food segment also Tata has entered. That Tata is having the pastas and noodles and whatnot. It means you can just carry it anywhere, just add hot water or just keep it in 2 minutes for into the oven and your food is ready. What do you think about the Tata? Now Tata have the huge team with them. टाटा ऐसा कुछ भी चीज गलती नहीं कर सकता है. टाटा आइडिया बना लेगा, टाटा एक प्रोडक्ट भी बना लेगा जो फंक्शनल भी होगा, रिलायबल भी होगा, यूजेबल भी होगा, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर ग्रेट होगा. बट एट द एंड ऑल्सो व्हाट टाटा इम्प्लीमेंटेड इज अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट जब उसका एडवर्टीजमेंट आया उससे कम से कम 2 साल पहले, कम से कम 2 साल पहले वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका था, एंड इट वाज केप्ट फॉर टेस्टिंग इनटू द स्टार बाजार, DMart, Reliance, and all different kind of what we can say the supermarkets which are available into the different major cities. Now, into the different cities also. Now, if we say what Tata did is कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, चार बेसिक चार प्रोडक्ट रख दिए. उसके अंदर एक दाल मखनी रख दिया, एक पास्ता रख दिया, एक छोले चना वाला एक प्रोडक्ट रख दिया, एंड और एक कुछ प्रोडक्ट है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. बट ये चार प्रोडक्ट करके उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे बेसिक सिर्फ चार बनाए उन्होंने. इट मीन्स व्हाट के फंक्शनल तो है, विच यू कैन सी द लास्ट पिरामिड. फंक्शनल तो हो गया, एक नॉर्मल जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हो गया. रिलायबिलिटी के लिए जो भी उनको लाइसेंसेस चाहिए थे, जो भी उनको टेस्टिंग करना था, वो सारी चीजें उन्होंने कर लिया. यूजेबल है कि नहीं, मार्केट क्या है, वो सारी चीजें कर लिया. उसका डिजाइनिंग, पैकेजिंग, वर्किंग, वो सारा चीजें कर लिया. कॉस्टिंग देख लिया, इनोवेशन अकाउंटिंग कर लिया, वैलिडेशन कर लिया, लैब टेस्टिंग कर लिया, सारी चीजें कर लिया. ओके, सो टाटा ने क्या किया था, विच यू कैन सी इन द पिरामिड, एक छोटा सा पोर्शन लिया और वो चारों चार हिस्से उन्होंने पूरे पिरामिड के कवर किए. रादर देन कवरिंग द होल ट्रायंगल, उन्होंने क्या किया, जो स्काई ब्लू वाला जो चार पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, वो चार पोर्शन उन्होंने कवर किए. इट मीन्स व्हाट कि उन्होंने उसमें से देखा कि भाई एग्जैक्टली दुकान वालों को भी क्या चाहिए, क्या प्राइस ठीक है या नहीं, क्या उसका टेस्ट ठीक है या नहीं, या कस्टमर रिकॉल फैक्टर कितना चलता है, हाउ मेनी पीपल वांट द बैक देयर प्रोडक्ट्स अगेन टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट. So after looking at this four particular scenario, they thought about the differentiation into the product. कुछ भी अलग करने का उनको improvement करने का जरूरत लगा. So after the improvement, now they are into the market. Now they are having the TV advertisement also, because their whole triangle is now completed. But initially they started with the only minimum viable product. That is the sky blue portion of the triangle of all the four parts of the pyramid. इसके साथ one more example I can give you, that is you all might have heard about Dropbox. जीवन में जब गूगल कुछ करता है तो उसके सामने किसी को आने की हिम्मत नहीं होती है. गूगल ड्राइव when already it is established into the market, Microsoft का OneDrive is already into the market, so nobody can think about such things कि भाई we will be selling the space which is exactly the same like Google Drive, which is known as a Dropbox. Again, one of the very successful lean startup जिसे कहा जाता है Dropbox. You all might have heard about it, obviously.
आपको आता भी होगा, अगर आपने नया लैपटॉप या कुछ भी खरीदा है आफ्टर 2011, तो डेफिनेटली एक ब्लू कलर का एक बॉक्स वाला आपको एक आइकन दिखा होगा आपके लैपटॉप के अंदर, दैट इज ड्रॉप बॉक्स। ओके, so what was the Dropbox about? When we see a startup, उन्होंने हिम्मत किया कि भाई there is something which you can come up into the market, but initially nobody knew about, nobody was knowing about Dropbox. So what they did is they slowly gradually started from all the four pyramids, and now you can see the Dropbox is successful in one particular market. Again, let's understand what exactly is the minimum viable product. ओके, अगर सिग्निफिकेंटली अगर इस चीज को देखा जाए या अगर एक टर्मिनोलॉजी के थ्रू देखा जाए, तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और एमवीपी इज अ प्रोडक्ट विथ इनफ फीचर्स। अब उतने फीचर्स एक प्रोडक्ट में होने चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर आपके दरवाजे तक वो प्रोडक्ट खरीदने आ जाए। ओके, दैट इज दैट अट्रैक्ट द अर्ली अडॉप्टर कस्टमर। ओके, ऐसे भी नहीं कि वो नॉर्मल वाले या वैसे वाले नहीं, नॉर्मल गुड कस्टमर। एंड सेकंड थिंग इज हु कैन वैलिडेट योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो भी चल रहा हो उसके अंदर आपके प्रोडक्ट को एक वैलिडेशन दे सके। ओके, नाउ एज फार एज यू कैन सी, खास करके आईटी कंपनीज आर देयर, सॉफ्टवेयर वाले कंपनीज आर देयर, व्हाट दे डू इज दे जनरली क्रिएट द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर नॉर्मल होता है, जैसे जैसे लोगों का फीडबैक जाता है, जैसे जैसे लोग अपनी क्वेरीज बताएंगे, वैसे वैसे वो क्या करेंगे, खुद भी सीखते जाएंगे, प्रोडक्ट को भी सुधारते जाएंगे, राइट? So MVP is kept in front of you. That is the most rudimentary, bare bones foundation of the solution possible. Viable is sufficient enough for the early adopters, and the product is something tangible customers can touch and feel. If it is a services also, when we say minimum viable product, it is applicable to the services also as well. Because when we say a website, when we say a software, then also it is having one particular stand into the market which can hold them very tightly, right? Now, next, before going to the minimum viable product and how it is connected with the lean startup and how it has to be pointing out, let me have one particular question with the people we have today, the great minds we have, the students of them. Now, about the key principle of lean startup, why people need to go for a startup? Why people want to create all this minimum viable product? Any idea? Prototype बनाना ही क्यों है? To be very frank and very layman type of language, prototype क्यों बनाना है? Any of the participants? Please answer what sir is asking. You can also write down in the chat box. Yes, yes, you can definitely write down in the chat box also. If you have any queries also, you can keep your questions into the chat box. We will be having last 5-7 minutes for the same, and we'll discuss that also. Why we need to create the prototype? Sir, are you sharing some PPT? Yes, sir, PPT is already on. But we cannot see the PPT actually. Oh, oh, oh. Okay, just a second. I didn't want to interrupt you, that's why I didn't say. Oh, no, no, no. Sorry, I was actually, my whole time the PPT was on, so I just asked also that I could see the screen, but I think might be some issue. Now it's visible, sir. Okay, okay, okay. Sir, we have an answer from one of the students. Make the product perfect for the market. Okay, just a second.
Okay, so yes, let's go towards the answer to Vivek. Bhakat ji is saying to make the product perfect for the market. Absolutely correct. So what happens is initially no product is perfect when we say about the particular startup thing or the prototype thing, as we have seen, or the example of Tata also. So for this whole particular different scenario, if we discuss, the general idea that comes with the two particular aspect majorly, let me just, if I can directly put it up, okay, which I think you can see on the screen also. That one is the lean startup methodology. That is first one to build up, to measure, and to learn. Now, what happens is that when we are talking about a measurement, there comes the important strategy of MVP. Okay, there is the possibility of the market products which are already there, and there is the existing market also. Now, can anybody tell me that what is the need of an hour? What exactly the market need as of now? अगर आपको कोई बोले कि यार आपको कोई स्टार्टअप करना है, तो आप ऐसा कौन सा स्टार्टअप करना पसंद करोगे, या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिसे आप वैलिडेट कर सकते हो? Anybody who can who have any idea or something? Because I think बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि who might be having a great vision, या जिनको ऐसा लगता भी होगा कि we have a great idea with us, but somehow we are lacking something. Because at in Gujarat, generally the thing is that I work with the EDI, I work with government of Gujarat with the incubation center. At our premises also we have an incubation center, and we are already running with many of the startup ideas, and which are generally the award winning also. So anybody having any such idea कि यार ऐसा लगता है यार ये एक मार्केट है, मार्केट के अंदर अगर मेरा प्रोडक्ट अगर मैं डाल दूं तो रातों रात कुछ भी अच्छा हो सकता है. आई एम 100% श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग सर एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो, ऐसा कुछ ना कुछ तो एक डेफिनेटली आया होगा यार कि ये कर लिया, या मार्केट में ये होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए. जैसे एक छोटा सा प्रोडक्ट के बारे में आई वुड लाइक टू डिस्कस, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि जैसे समझो कि एक ये व्हाट यू कैन से शार्क टैंक में एक प्रोडक्ट आया था कि भाई लोग जनरली व्हेन they tie themselves on the fan, or when they make the suicidal attempt. So I think बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आई थिंक यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि वो किया था कि अगर कोई भी अगर वो फैन के साथ अगर टंगना चाहता है तो दे यूज्ड टू सेल अ रॉड. इतना एक रॉड 2 फीट का वो सेल करते थे, वो आप पंखे में लगा दीजिए, कोई भी पंखे में लग जाएगा, एंड कभी भी अगर ज्यादा वेट आया तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा. जीपीएस और उसके थ्रू लोकेशन पता चल जाएगा, फैन के थ्रू मोबाइल पे अपडेशन आ जाएगा, एंड एवरीथिंग. नाउ वैसे देखा जाएगा तो एवरीबडी थिंक्स अरे यार इस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट यू नेवर नो कि भाई इसका जरूरत कहाँ पड़ सकता है. यू नेवर नो कि कब कब ये चीजें इम्पोर्टेंटली यूज हो सकती है. तो ऐसी चीजों को भी 1-2 करोड़ रुपए का फंडिंग मिल जाता है. एट द सेम टाइम अगर उसी शार्क टैंक का एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो आपने देखा होगा एक पेप्सी कोला आता है, जस्ट मार्केट में से खरीदो, फ्रिज में रखकर उसको आइस करो और वो स्कूल वाली यादें ताजा करो. ओके, उसको भी 1-2 करोड़ का फंडिंग मार्केट में से मिल जाता है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. आंसर इज बोथ. बिकॉज जहां पे हम खुद बड़े होके भी देन वी ऑल्सो लाइक टू गो फॉर अ गोला, वी लाइक टू गो फॉर आइसक्रीम, वी वांट द डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम द मार्केट. ओके, and when we are saying we want the different taste, when we want the different things into the market, we are looking for the new product into the market. नया प्रोडक्ट हमें मार्केट में से चाहिए कुछ भी करके. बहुत ही कम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको लेके हम बहुत ही फेथफुल हैं. So that one include the toothpaste. जनरली टूथपेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जनरली आप बार बार चेंज नहीं करते हो. चाय कॉफी के ब्रांड जनरली ऐसा है जो अगर आपके रेगुलर यूज में है जिससे आप बार बार चेंज करना पसंद नहीं करते हो, जो आई थिंक पूरे लाइफ टाइम में शायद 2 या 3 बार चेंज हो जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो खुद के बारे में भी. अगर आप बचपन में से, ठीक है, एंड आई थिंक इस पे तो मुझे सब लोगों के आंसर्स चाहिए. ओके, कितने लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह चाय पीते हैं? आई थिंक विवेक इज आंसरिंग. एक विवेक चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो
I think if I'm not wrong, रोज सुबह we have a one habit. Either you will be having a Bonvita or Horlicks, ठीक है. Second one is either you are having a coffee, and the third thing is either you are having a tea, और फोर्थ सिंपल मिल्क, ठीक है. ये चार के अलावा किसी के पास 130 करोड़, इंडिया के बारे में अगर हम खास करके बात करें, 130 करोड़ की जनता में से ये चार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. अगर ये चार ऑप्शंस के बारे में बात करूं तो जनरली ये चार ऑप्शन में से आप स्विच कर पाओगे, लेकिन पूरे लाइफ टाइम में आप स्विच करोगे सिर्फ 2 या 3 बार. इसका मतलब कि जैसे विवेक इज ड्रिंकिंग टी एवरी डे, तो हो सकता है बचपन में वो बॉर्नवीटा पीते हो या दूध पीते हो, बाद में ही टर्न अप टू द टी एंड चाय के बाद नाउ ही विल टर्न अप टू द कॉफी. लाइफ में कभी एक बार ज्यादा पैसा आ गया, लाइफ पूरा सेट हो गया एंड एवरीथिंग, तो बाद में क्या होगा, ग्रीन टी स्टार्ट होगा, फिर थोड़े से इलाइट क्लास हो गए तो वो जापान वाला चाय आ जाएगा, चाइनीज चाय जनरली दैट विल बी कमिंग इनटू द मार्केट, एंड धीरे धीरे जैसा लाइफ अपग्रेडेशन होता जाएगा प्रोडक्ट विल चेंज. बट ये भी पूरे लाइफ टाइम में 4 बार. अगर आपने देखा होगा आपका टूथपेस्ट जो आपका चलता होगा 10-15 साल तक, 20 साल तक तो एक ही चलता है. इसका मतलब 25 साल तक आप जो करते आ रहे हो वो 25 साल तक वही कर रहे थे. 25 साल के बाद चेंज होता है. चेंज होने के बाद देन कम्स टू द अनदर मार्केट. इसीलिए आप देखोगे देयर इज नो सच एनी स्टार्टअप which comes with the particular toothpaste या चाय कॉफी बनाने वाले प्रोडक्ट में स्टार्टअप बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? अगर आपने कुछ प्रोटोटाइप बना भी लिया तो उसे एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट के अंदर नहीं मिलता है. दैट इज जहां पे एक मार्केट है, एक पॉसिबल मार्केट, अब में प्रोडक्ट्स आपके ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर फिट हो सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी, उसका पर्टिकुलर चांसेस बहुत 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 ही कम है. इसलिए वो प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं चल सकते हैं. दूसरा, एक लीन स्टार्टअप का एक सबसे क्लासिक एग्जांपल नया देता हूं. 130 करोड़ में से आई थिंक ऑन एन एवरेज एक रिसर्च ऐसा कहता है कि एक दिन में कम से कम 25 से 30 हजार लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनका टायर पंचर होता है. डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है. 25 जनरली लेट्स टेक एवरेज, एक लेते हैं कि भाई 15,000 लोग ऐसे हैं एक दिन में जिनको ये प्रॉब्लम आती है या टायर पंचर हो जाता है. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट? याद करो आपके जितने भी स्टूडेंट्स, आई थिंक अभिनंदन सर, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस. आई थिंक वी हैव 28-30 पार्टिसिपेंट्स. Yes, sir. Maximum of मेजरली वी हैव स्टूडेंट्स, राइट? Maximum students. ओके ओके. Yes. अगर स्टूडेंट्स बोलूं, अगर वी हैव फैकल्टी मेंबर्स आल्सो, ठीक है, अगर मैं सारे एज ग्रुप को मिक्स भी कर दूं, आपके दादा से लेके आपके परदादा से लेके आज तक अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी साल या कोई भी एक ईयर ऐसा नहीं हुआ है जिसके अंदर आपकी व्हीकल में पंचर ना हुआ हो. आपके घर का कोई भी एक व्हीकल ऐसा नहीं हुआ होगा जिसका टायर एक भी बार पंचर ना हुआ हो. आपकी गाड़ी एक साल में कम से कम 4-5 पंचर वो खा जाती है, मतलब 500-600 रुपए का वो कंपलसरी खर्चा आपका मैंडेटरी खर्चा है. There is one product now, many of people have started also with that particular lean startup, and वो प्रोडक्ट ऐसा है कि there is one particular liquid जो आपको 250 ml टायर के अंदर बस डाल देना है, और ट्यूब वाला हो या ट्यूबलेस टायर हो, कुछ भी हो, वो जैसे जैसे आपका टायर रोटेशन में जाएगा उसके बाद एक ऐसा केमिकल रिएक्शन से फॉर्मुलेशन आ जाएगा कि कोई भी कील या एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या नुकीला प्रोडक्ट भी आपका टायर चीर के वो अंदर नहीं आएगा. Now, if you look at this particular startup, तो वैलिडेशन करने कहाँ जाओगे आप? टायर पंचर वाले के वहां. लेकिन पंचर वाले को तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज उसका धंधा बंद हो जाएगा. ओके, सो क्या होता है, वेन एवर यू हैव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज हैविंग लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, ओके, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल यू गेट अ रॉन्ग डेटा. यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट इज. यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बारे में. अब आपका वैलिडेशन बहुत सही है, आपका प्रोडक्ट बहुत सही है, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के अंदर दूसरी चीज होती है कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट चलता है या नहीं. अगेन, अगर बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एक प्यार जैसा है. ओके, आप तो प्यार बहुत करते हो लेकिन सामने वाला उसे समझ नहीं पाता है.
राइट? तो वो तो यार आपका फीलिंग्स है ना, मार्केट में भी तो वो चीजें चलनी चाहिए, मार्केट में भी तो वो चीजें समझना चाहिए। आपको लगता है आप सही है, दैट डज नॉट मेक योर प्रोडक्ट अ वायबल प्रोडक्ट। दूसरी चीज, अनदर एक स्टार्टअप बहुत ही बेहतरीन मार्केट में चलता है, नाउ यू ऑल्सो नो, लक्ष्मण रेखा करके एक कॉकरोच से कॉकरोच हटाने वाला एक चौक आता था, ठीक है? सारे फैकल्टी मेंबर्स ने अपने घर में यूज किया होगा, जो भी स्टूडेंट्स है आप लोगों ने भी आपके घर में यूज किया होगा। आपकी कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सबके घर का स्टोरी सेम है। हर किसी ने वो लक्ष्मण रेखा वाला, या एक वो चौक आता था, वो चौक ऐसे 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 गिरते थे, उसमें कॉकरोच नहीं आता था, ठीक है? मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं है जिससे चिपकली ना आए? आई थिंक सबको ये प्रॉब्लम है ही ऑलरेडी इन टू द मार्केट, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरीबडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम। तो भैया एक चिपकली को दूर करने का प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं है? या है तो भी क्या है, उसका वैलिडेशन नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं है, ऑलरेडी प्रोडक्ट्स आर देयर इनटू द मार्केट। अमेजन पे जाओ, गूगल करो, आपको प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से मिलेंगे, लेकिन क्या होता है, उसका वैलिडेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि भाई देयर हैज टू बी वन नॉर्मल प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, जिसे आप जनरली मेजर कर पाओ, बिल्ड कर पाओ, एक उसका कोडिंग कर पाओ, उसका डेटा एनालिसिस कर पाओ, देयर हैज टू बी द आइडिया, या नया अपग्रेडेशन का आइडिया, या थोड़ा डाउन फेस करने का आइडिया। यहाँ पे सारी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसे कहा जाता है लीन स्टार्टअप। और लीन स्टार्टअप के साथ एग्जैक्टली वी हैव मर्ज्ड इट, आई थिंक ये शायद आप लोगों ने एक बार नहीं देखा होगा, दैट इज अबाउट द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ओके, जैसे आइडिया है, उसे प्रोडक्ट में बिल्डअप किया, प्रोडक्ट करने के बाद मार्केट में से वैलिडेशन लिया, डेटा कलेक्ट किया, देयर वाज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट किया, एंड आफ्टर दैट मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट क्या करता है, एक जो ट्रायंगल, एक पिरामिड होता है, हर हिस्से का छोटा छोटा वैल्यूएशन क्रिएट करके ले लेता है। उससे जनरली मार्केट में पता चल जाता है कि whether this product is will be viable or not into the market. And so here generally the things comes, or the market generally things starts, that is about the startup. और this is how we can say कि भाई एक स्टार्टअप कैसे रन होता है, तो उसका यही तरीका है, उसका और कोई तरीका नहीं होता है, राइट? So uh, I think we are clear with the concepts of what we can say the important thing about lean startup and minimum viable product. तो एक प्रोडक्ट का जनरली मार्केट में सस्टेनेबल होने के लिए एक पूरा, जहां पे द लास्ट थिंग आई थिंक आई कैन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ओके, एक प्रोडक्ट को मार्केट में बिल्ड करने के लिए, एक प्रोडक्ट को मार्केट में सस्टेन होने के लिए, जहां पे एक प्रोटोटाइप बनता है और द बेसिक थिंग्स आर बीन बिल्ड, उसको मेजरमेंट होगा एमवीपी के तौर पे, यानी एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसे मार्केट फिट किया जाएगा। मार्केट फिट किया जाएगा इसका मतलब कि एक प्रोडक्ट को मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के तौर पे उसको कितना वो मिलेगा, उसके 3 स्टेजेस अलग अलग डिफाइंड होते हैं, ठीक है? सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट सॉल्यूशन। अब प्रोडक्ट का सॉल्यूशन या मार्केट फिट कहाँ से लाओगे, व्हेन यू हैव द प्रॉब्लम, ठीक है? सॉल्यूशन कहाँ से लाओगे, बिना प्रॉब्लम के तो सॉल्यूशन ही नहीं आ पाएगा। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद यू हैव टू फाइंड कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का क्या कोई प्रोडक्ट है, क्या उसका कोई मार्केट फिट है, ठीक है? फिर अगर वो दोनों चीज अगर आपके हाथ में लगती है, तो देन यू मूव टुवर्ड्स द ग्रोथ स्टेज। ओके, दैट इज एक मार्केट के अंदर आपका पॉसिबल प्रोडक्ट हो गया, जिसका आपने क्या किया, जनरली आपने उसके ट्राइंगल्स बनाए, मतलब हर लेवल पे फंक्शनल, रिलायबल, यूजेबल, ग्रेट डिजाइन देखा, एंड देन जनरली योर प्रोडक्ट कम्स इनटू द पिक्चर, या यहाँ पे आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपका मेजर किया जाता है। आई थिंक all are, I hope everybody would be clear with this point. I think we are ready with any questions and any suggestions from you all people. अगर आप लोग कुछ पूछना चाहे या something, or else I have one last story to share, 2 stories to share, and I think then we will end up, अगर आपका कोई questions या कुछ नहीं है तो। Okay, think about it. We'll just wait for a minute. अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज आ रहे हैं तो यू कैन कीप अप। अगर आपके पास अगर कुछ स्टार्टअप का अगर बेसिक आइडियाज भी है,
अगर आपको लगता है एक छोटा सा प्रोडक्ट भी है उसे कैसे वैलिडेट किया जाएगा, तो आई थिंक मैं 2 मिनट के अंदर एक क्रिस्प आंसर आपको दे पाऊंगा, या फिर बाद में भी मैं आपको ईमेल के थ्रू या आपके चैट बॉक्स के अंदर या अभिनंदन सर के थ्रू मैं आपको वो आंसर उसके जो भी हैगा वो आई कैन प्रोवाइड टू यू लेटर ऑन। अगर आपको कोई लगता है ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके दिमाग में है, या यू नो द प्रॉब्लम, चलो सिंपल, सॉल्यूशन नहीं पता, प्रॉब्लम पता है कि मार्केट में ये प्रॉब्लम, कुछ भी उठा सकते हो। सी, जस्ट थिंक एट द लार्जर होराइजन। Anything coming to your mind? Anybody from the faculties, if you have anything to ask or anything you want to share or something? Okay, I have two stories left जो मैं बस share करने वाला हूँ, and then we'll go ahead. Any of the participants? Any? अभिनंदन सर आपको? जी सर बोलिए सर। Okay, अभिनंदन सर, even you can share your inputs अगर आपको भी, अगर if you can feel नहीं, anything आपने जो शार्क टैंक का जो स्टोरी बोल रहे थे सर, मैंने देखा था वो एक्चुअली कॉलेज हॉस्टल्स में जो प्रॉब्लम होता है इसके लिए बनाया गया था पूरा एपिसोड में। right, exactly. Right. और एक प्रोडक्ट देखा था जो रेस्टोरेंट के Okay, no worries. सैनिटी के लिए मेंटेन हो रहा है, जो ये टीथ गम केयर लेकर कुछ सिलिकॉन का बना हुआ था। Exactly. हाँ, Exactly. ऐसे कि झूठा नहीं पीना चाहिए, इसलिए At least it is a good thing. I think the Shark Tank is also a good platform that it is starting and creating the entrepreneurial mindset in the students. As of now, it's a very great thing to see. Okay, so I think let's move towards the last two stories, and then we will wind up with the permission of Abhinandan sir. Okay, एक चीज मैं बताता हूँ कि generally even I recently visited Tirupati and that's why I have this cap also because वो थोड़ा as per the tradition. अब तिरुपति के अंदर generally I'm talking this about around maybe 10 years down the line back के बारे में बता रहा हूँ, जब मैं पहले भी एक बार गया था, now also I have visited recently. Okay, तिरुपति में लड्डूस बनते हैं, and I think तिरुपति लड्डूस का story are already there on a National Geographic, on a Discovery, YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस पर वीडियोस बनाए कि रोज इतने लाखों लड्डू बनाना, how it is possible. Another thing, जहाँ पे इंडिया के अंदर खास करके जहाँ पे फेथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे देर आर सम एस्थेटिक्स एसोसिएटेड, वेयर द फीलिंग्स आर एसोसिएटेड, वहां पे मशीन वाला प्रोडक्ट जो है वो नहीं चलता है। आपने कभी भी घर में ऐसा देखा? आप सबने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ पे भगवान के लिए प्रसाद बनेगा या भोग बनेगा या घर में कुछ भी बनता होगा तो सारी चीजें प्योर यूज की गई होगी, सारी चीजें अलग से ली जाती है, उस दिन स्पेशल केयर किया जाता है। स्टूडेंट्स और आप लोग ने सबने ये ऑब्जर्व किया होगा, सबने गालियां खाई होगी, अभी किचन में मत आओ, अभी बहुत सारा काम है, यहाँ पे सब संभाल के करना है, समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग। यहाँ पे नहीं तो मंदिरों में कहीं देखा होगा, गुरुद्वारे में देखा होगा, अगर अभी रिसेंटली ईद गया है तो ईद के अंदर भी आपने देखा होगा जहाँ सेवैया बनती है या ये प्रोसीजर जहाँ चलता है, तो दे कीप इट वेरी प्योर, दे कीप इट वेरी पायस। ठीक है, यही प्रोसीजर अगर कोई और करता है, इवन टेम्पल्स के अंदर या कहीं पे भी लंगर जहाँ पे लगते हैं गुरुद्वारा में खास करके, यू ऑल माइट हैव ऑब्जर्व्ड, तो वहां पे जनरली मशीन एडेप्टेबिलिटी वाज वेरी लेस बिफोर 10 इयर्स, बिफोर 15 इयर्स। लंगर में भी आजकल आप देखोगे, इफ यू गो टू अमृतसर, अगर आप देखोगे, अगर उसका किचन अगर आपको विजिट करने मिले, यू मस्ट विजिट, ठीक है, थोड़ा पहचान वहचान लगा के भी, यू मस्ट ऑब्जर्व कि यहाँ वहां लाखों रोटियां मशीन में निकलती हैं। ओके, इफ यू गो टू द साई बाबा टेम्पल शिरडी, तो वहां पे आप देखोगे लाखों रोटियां ऐसे मशीन में निकलती है। ठीक है, तो पहले इसका एडेप्टेबिलिटी नहीं था। पहले क्या होता था, भैया बावर्ची लोग बैठेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, एंड देन इट विल कम टू द नॉर्मल इन योर प्लेट, तो फिर आपको क्या फील होता था, एक टेस्ट फील होता था। नाउ द थिंग इज व्हाट हैपेंस इज
कि जब लाखों लोग रोज के आते हैं, तो इवन आई हैव ऑब्जर्व दैट थिंग। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ऐसे नहीं किया, पैसा तो बहुत था, ओके, एंड वी ऑल नो तिरुपति बालाजी या तिरुपति देवस्थानम के बारे में बात करें या पद्मनाभम टेम्पल के बारे में बात करें, तो पैसा या मनी या बजट या कोटेशन इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, दे डोंट ऑब्वियसली दे कंसिडर इनटू देयर अकाउंटिंग, बट फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है रातों रात किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट अगेन दे स्टार्टेड विद वन मशीन, तिरुपति बालाजी बैक इन 2011 दे स्टार्टेड विद द वन मशीन ऑफ रोटी मेकिंग, और उसके अंदर रोज की सिर्फ 10 रोटियां बनती थी एट दैट पर्टिकुलर 2010-11 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 10 रोटी सिर्फ बनती थी, लड्डू बनते थे तो रोज के 50 लड्डू बनते थे एक मशीन के अंदर। मतलब दैट वाज द प्रोसीजर कि एक मशीन में वो चीजें डाल दिया सुबह से, वो ऐसे ऐसे करके 1-2 घंटे के अंदर 50 लड्डू क्रिएट हो जाते थे, एंड पीपल यूज्ड टू एंजॉय इट, या एक प्रसाद के फॉर्म में जनरली मिल जाता था। उन्होंने सोचा कि यार रोज लाखों लोगों को इतना लड्डू दिया जाना चाहिए, तो लेट्स क्रिएट अ एमवीपी, अगेन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। उसका फंक्शनैलिटी देखते हैं, उसका रिलायबिलिटी देखते हैं, उसका यूजेबिलिटी देखते हैं, उसका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर देते हैं, एंड हाउ एग्जैक्टली हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे मार्केट में रन करेगा। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट दैट के भैया मार्केट के अंदर हमारा सिर्फ स्टार्टअप है तो ही वो लीन स्टार्टअप है। अगर एक बड़ी एस्टैब्लिश कंपनी के अंदर भी अगर उसका फंक्शनैलिटी देखना है, अगर उसका फंक्शन चेक करना है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू चेक अबाउट जो इम्प्लीमेंट किया गया है तिरुपति देवस्थानम में। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज देयर इज वन ब्रांड जनरली जो स्मॉल कार्स बनाती है, बहुत छोटी छोटी गाड़ियां बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बना पाती है, जिस कंपनी का नाम है रोल्स रॉयस। ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस 5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। ओके, कंपटीशन में दूसरी एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है बेंटले। Okay, now obviously jokes apart, we all know Rolls-Royce and Bentley बहुत ही कॉस्टली कार्स बनाती है, कस्टमाइज कार बनाती है, हर किसी के लिए एक एक इंडिविजुअली कार्स को क्राफ्ट किया जाता है। Okay, one question generally I would like to ask, but what do you think that Rolls-Royce, do they believe in MVP? नया कार का प्रोडक्ट बनाता है तो क्या करता है वो, मैं क्या मार्केट में चेक करते हैं क्या कि हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं? देखो, मारुति तो नहीं करता है, होंडा नहीं करता है, प्रोडक्ट बना लिया मार्केट में डाल दिया, ठीक है, कभी भी उसका ये ऐसी कुछ चीजें बेसिक कार्स में नहीं होता है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द अदर कार्स, जैसे एक्सयूवी 700 का एग्जांपल ले लेते हैं या थार का एग्जांपल ले लेते हैं। थार इज अगेन द क्लासिक एग्जांपल, सेम गोज विद लाइक रोल्स रॉयस एंड ऑल। थार में और एक्सयूवी 700 में इतना वेटिंग क्यों है पता है? Because it is having the feature of a selfless driver, or we can say the driverless car, or we can say the cruise control, कि भाई आप ऐसे पालती पालती मार के बैठ जाओ, कार अपने आप चलेगा। ओके, नाउ वेदर दिस फीचर इज अडेप्टेबल बाय इंडियंस और नॉट, वेदर ये कार सक्सेसफुल चलता है या नहीं, वो लोगों में, वो कंपनी को नहीं पता था। कंपनी जब तक बेसिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करता तब तक पता नहीं चलेगा। थार लॉन्च कर दिया, बट अगेन थार के अंदर लोगों ने खरीदा, उसके बाद पता चला कि भाई पीछे स्टोरेज कैपेसिटी कम रहता है, ऊपर चली तो जाती है, एक टशन वशन के लिए अच्छा है, लेकिन इंटीरियर वाइज या क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं चलता है। वेरएज फॉर्च्यूनर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, फॉर्च्यूनर में लाइट आगे पीछे इधर उधर करके इंटीरियर कुछ भी चेंज करके मार्केट में जस्ट लॉन्च कर दो फॉर्च्यूनर, ऑब्वियसली 100% वेटिंग होगा। रोल्स रॉयस बेंटले क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट या डिजाइन मार्केट में चलेगा या नहीं, उसके लिए वो लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो प्रोडक्ट बनाते भी नहीं है, प्रोडक्ट का डिजाइन लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट डिजाइन से क्या होगा, जितना उनका जनरली ऑर्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको पता चल जाएगा वेदर अवर प्रोडक्ट इज फिजिबल और नॉट इनटू द मार्केट। वो सिर्फ डिजाइन लॉन्च करते हैं। कैन यू इमेजिन, वन स्टेप अहेड टू द बिल्ड, मेजर एंड लर्न। ओके, अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट में सस्टेनेबल लगता है कि हाँ चल जाएगा, तो दे बिल्ड प्रोटोटाइप। ठीक है, एक बिल्ड कर लेते हैं कुछ कार्ड, ठीक है, फिर उसका कोडिंग करके उसे मेजर करके फिर उसको लर्न कर देते हैं। अगर आपने बहुत सारी बार ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में देखा होगा लिमिटेड एडिशन के नाम से,
Now what is limited edition? अगर लिमिटेड एडिशन वाला प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा पैसा दे सकता है तो वो तो ज्यादा बनाना चाहिए ना. या लिमिटेड एडिशन के नाम पे इट हैज अ डिफरेंट वेरिएशन. आई अंडरस्टैंड लिमिटेड एडिशन है, थोड़ा कॉस्टली है, आपको अच्छा फील होगा. नाउ जस्ट टेल मी, फरारी वाले ने अगर घड़ी लॉन्च की है, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद टैग ह्यूअर कि भाई वी आर हैविंग ओनली 10,000 प्रोडक्ट इन होल वर्ल्ड, आपको कैसे पता वो 10,000 है या 1 लाख है? तो जनरली तो मार्केट में ये चीजों के बारे में पता नहीं चलता है. ओके, नाउ वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम पलाश एंड देयर इज व्हाट आर द 3 important startup issues. Okay, number one startup is about the reliability factor which generally comes. Yeah, a confidence factor that whether our startup will function or not, whether our startup will run or not. And the most important thing is the problem identification. Okay, number one comes the problem identification. प्रॉब्लम को ही नहीं समझते हैं तो जनरली आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होगा. ओके, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एबिलिटी नहीं है तो दैट इज नॉट अ स्टार्टअप, दैट इज जस्ट अ बिजनेस. ठीक है, अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहते हो कुछ भी चीज करके और आप अगर उसको स्टार्टअप का नाम देते हो तो दैट इज नॉट स्टार्टअप. नंबर वन, गलत फहमी, इसे गलत फहमी भी कह सकते हैं. ओके, सेकंड थिंग कम्स इज अबाउट मनी. फंडिंग कहाँ से आएगा? अगर आपके प्रोडक्ट को मार्केट में फुल फ्लेज लॉन्च करने के लिए या एक एमवीपी करने के लिए भी अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो सेकंड थिंग कम्स कि भैया पैसा कहाँ से आएगा. एंड द थर्ड थिंग कम्स कि एंटरप्रेन्योर्स के एंथुजियाज्म के साथ, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ ऐसा वी फील कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन वो मार्केट में नहीं चल पाता है बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एमवीपी या बिल्ट मेजर लर्न वाला जो मॉडल है या वो उसके बारे में हम चीजें नहीं समझते हैं. एंड द फोर्थ वन अगेन दूसरा एक आता है, हम समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली इतने सारा एनालिसिस, इतना सारा गुच्छम जो चल रहा होता है कि भैया कौन सी चीज पहले करे कौन सी चीज बाद में करे. सो प्रायोरिटाइजेशन या एक स्टेप वाइज लिस्टिंग ऑफ अ स्टार्टअप इज नॉट डन, जिसकी वजह से पता नहीं चलता है. ओके, so this I think your question is been clear, Palash. This is it. And any more questions from your end? Any of the participants like to ask some questions? Any questions? Okay, I think sir, there are no questions from the participants. there's no question, but still okay, no issues. You have my contact number, email ID, and even Abhinandan sir is there to help you out. If you have the queries later on also regarding this particular thing, you can definitely reach out anytime, and your queries will be definitely solved. And obviously, all the faculty members are there with you. I think they are very helpful and they will help you at each and every phase or in your startup journey also. So I think thank you very much, all of you, all your students, all the faculty members, and Abhinandan sir for this opportunity. Thank you for having me over here. Thank you, sir. And any other thing, Abhinandan sir, would you like to say? Or yes, sir, sure. I would like to announce another session that sir is having on 18th on the funding opportunities for startup. So participants get mark the date. The time will be same from 6 p.m. And on behalf of our institute, sir, I would like to thank you from Sri Ramakrishna Institute of Science and Technology. We have given your time, your knowledge, and the session was very interesting, sir. Today I have learned many things in this session. It was a very interesting session, sir. Yes, sir. I need to mention this, sir. I have attended many sessions for the last 2-3 years, but this session was very energetic session, I must say, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So thank you again, sir. Thank you for giving us your time, sir. Thank you very much. Thank you all the faculty members, and thank you, Abhinandan sir. Thank you, sir. Thank you. We will wait for your session on 18th, sir.
again on the funding opportunities, sir. For sure, for sure. Sure, sir. Thank you very much, sir. I'll just leave now. Thank you very much. I'll leave the meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, participants. Thank you for your patience. For the next 2 days, from 15th and 16th, we are not going to have the sessions. Uh, we have more 2 sessions on 17th and 18th at the same time with the same link. Okay, so see you all on 16th, 17th evening. Okay, thank you all. Thank you all the faculties. And another request, please ask some questions, interact with the speakers. Okay, thank you all the participants and all the faculties. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you.